करेंगे. What is important that you must prepare all the ratings that are being assigned to you. जी कोई क्वेश्चन. No, sir. ओके सो अब हम चलते हैं फर्दर इन टॉपिक्स की तरफ. इफ यू रिमेंबर आई लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल्स दिस थ्योरी. हम इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, इसका ओरिजिन और सिमिलरली इसका डाउनफॉल, इसका राइज, इस पे जो क्रिटिसिज्म हुई है, इसका जो डाउनफॉल हुआ है वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, we will try to go through that so that we have a clear idea, a complete, at least as possible, as much as possible picture of this theory. Acha. Now again, so far I told you simply this is the opinion of perhaps the oldest opinion. ये कोई नया ओपिनियन भी नहीं है, ये नया व्यू भी नहीं है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट व्यू अबाउट लॉ, दैट हाउ द लॉ ऑट टू बी. ठीक है ना, जब भी आप लॉ बनाना चाह रहे हैं तो यू हैव टू थिंक के हाउ शुड वी मेक द लॉ. बनाने से पहले ऑब्वियसली यू थिंक अबाउट दैट. सो सिंस ancient times, when the people had to make laws, they had to determine that how the law ought to be. So those people, the ancient people and the philosophers, they had thought, they did thought, think that the law is necessarily linked with the natural law. Our law must be in accordance with the natural law. एक ये हो गया. Or simply they say that there has always been a higher law, and our law must be according to that higher law. ये एक brief simple approach हो गई. Now the second question obviously that would come in your mind, it would be that how we gonna know or how we gonna determine and identify कि ये नेचुरल लॉ कहाँ है. ठीक है, मैंने अपना लॉ जो बनाना है वो नेचुरल लॉ के मुताबिक होना चाहिए. व्हाट इज नेचुरल लॉ? द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें एटलीस्ट ब्रॉडली देयर आर टू व्यूज in this theory, within that theory. It means that all the people who adhere to that natural law theory, they believe that there are certain higher higher moral principles, and our law according to these higher moral principle. Fine हो गया. Now what are these higher moral principle? इसमें थोड़ा सा again थोड़ा सा difference है, थोड़ा सा different opinion है. Anciently it had a religious approach, it had its origin or linkage with the religion, and they believe, some people, mostly people from the natural law theory itself, they believe that the guidelines, the basic principles given by the religion, these are basically the higher laws, the primary laws. And our law must be according to these principles and guidelines given by different religions. Obviously, it could be the prophet of his time, or it could be some of the scriptures that have been revealed to that prophet, alayhi salatu wasalam. So what does religion say about universe and mankind? ये हमें कुछ एज ए मुस्लिम हमें अंदाज़ा है कि एटलीस्ट जो यूनिवर्स है उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी भी है, they are created and are being governed by some deity, and उस deity ने या उस सुपर बीइंग ने कुछ प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं जो कि उसकी तमाम क्रिएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो एनिमेट हैं या चाहे इन एनिमेट हैं. ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम भी है, ये वही बिलीफ सिस्टम है. यहाँ पे उसी की बात हो रही है दैट एवरीथिंग, every part and parcel of the universe has been created by God, or it could be according to some religion, it could be other than God, it could be any other deity या जो भी इसके pronunciation है, and that all human
that whole universe and the whole human being and all the creature of in that universe, they are also within the control of that deity or within the control of God. ये उनका अप्रोच है. अब the God has created that universe, so has created certain rules and principles. और ह्यूमन बीइंग को उन रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, उनके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी होगी, उन प्रिंसिपल को अदर करना होगा. हमारे यहाँ अगेन इट्स वेरी सिंपल दैट कुरान इज revealed book that is the primary and foremost important guidance for all the Muslims. So all the laws that we make it according to the guideline that has been given by Quran and Sunnah as well. ठीक है. So ये यहाँ तक बड़ा सिंपल हो गया कि जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि ये जो नेचुरल जो हम हायर लॉ की बात कर रहे हैं बेसिकली दीज आर द स्क्रिप्चर्स सिंपल. और प्रॉफिट की जो सुनना है जो वहाँ से गाइडलाइंस आपको मिलते हैं बेसिकली दीज आर हायर मॉरल लॉज. मैन मेड लॉ को इस हायर मॉरल लॉ से कंप्लाई करना चाहिए, ये थ्योरी है बेसिकली. ठीक है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली मज़ीद डिबेट्स होती हैं, वो हम लेटर ऑन देखते हैं. हाउ पीपल केम टू नो अबाउट दीज प्रिंसिपल्स, तो रिलीजियस अप्रोच में तो बड़ा सिंपल है. all those people who believe in the prophethoodness of the different prophet, so they know that the revolution होती है prophets पे और वो जो scriptures की form में आती हैं that becomes ultimately guidance for the human beings या जो भी उनके faith followers होते हैं. So do these scriptures provide some standard principle morals? Do you think that all the scriptures that have been revealed so far by the religions, do they provide some sort of guidelines and some sort of standard for human conduct? What do you think about that? Zero.